Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Myself is Professor Uday Bhokre and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. Hope you are watching my videos regularly. If you have any suggestion, please put in our comment box. If you are watching my video at the time first, so please subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notifications. Friends, today we are going to discuss about CA Intercourse Accountancy subject, topic name cash flow statement, question number 5 which is on your screen. Of a Star Oil Limited has collected the following information for preparation of cash flow statement for the year ended 31st March 2000x1. They gave you net profit 25,000, dividend including dividend tax paid 8535, provision for income tax, it is paid, no? Paid means it is which activity? Financing activity. This net profit must be before declaration of dividend. Provision for income tax, it must have been debited to the P&L account. इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 4248, ये आपको लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से. लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इट मस्ट हैव बीन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, सो इट विल बी एडेड इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड इज 185, लॉस इज गिवन 40. दैट मीन्स व्हाट विल बी आवर सेलिंग प्राइस? Our selling price will be net of this. Depreciation charge to P&L account 20,000. So P&L account is debited. So I will add to the P&L account being it is a non-cash, that is operating activity में ये add हो जाएगा. Profit on sale of investment 100. Carrying amount of investment sold is 27,765. तो ये दोनों का टोटल करोगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा. और प्रॉफिट जो है वो अपने P&L अकाउंट में क्रेडिट किया होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से इसको माइनस करना पड़ेगा. इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश और बैंक डेबिट टू P&L, ये एंट्री इसका हुआ रहेगा. वी विल सी हाउ टू एडजस्ट इट. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, P&L अकाउंट डेबिट, ये P&L अकाउंट में डेबिट हुआ है. इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,520, ये आपको कैश आउटफ्लो है. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इट विल बी लेस फ्रॉम योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. परचेस ऑफ फिक्स असेट, कैश आउटगोइंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, less. Investment in joint venture, we have invested money in the joint venture, it is an investment purchase. Expenditure on construction of work in progress, it is once again cash outflow. Proceed from calls in arrears रिकवर हुआ है तो it is financing activity में add हो जाएगा. रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा. कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए किसका से पैसा मिला, बेसिकली लोन लिया है. प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा. प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,575, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा. शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो क्या हुआ सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो भी ये बोरोइंग है, ये फाइनेंसिंग है, ये लोन है, ये क्या है आपका? लोन. ओपनिंग एक कैश एंड बैंक बैलेंस इज गिवन 5,003, क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस इज गिवन 6,988. दे आर आस्किंग यू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2000x1 इन अकॉर्डेंस विद AS3. ठीक है, लेट अस प्रिपेयर. आई एम नॉट कंप्लीटिंग द फॉर्मेट इन दिस एग्जाम्पल, द रीजन बीइंग data is given straightforward, so I will complete format by format, I will complete step by step. यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना के अपना अकाउंटिंग नॉलेज यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, ठीक है? बिकॉज क्वेश्चन का नेचर वैसा है, क्वेश्चन में बहुत सारी बातें डायरेक्टली दी हुई है तो वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व दैट. नाउ दिस इज अ नेट प्रॉफिट, कैन आई से इट इज अ नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट. ठीक है, तो ये P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, उसके आगे का कोई भी चीज ये P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है. मतलब आई कैन से दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर एनी फर्दर अप्रोप्रिएशन. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन 25,000, it is after tax but it is before any kind of appropriations. Now I will do the adjustment for P&L account.
Dividend paid. Is that debited to this P&L account? No, it is afterward debited. So it is already before dividend. तो ये एडजस्ट करने का जरूरत नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मस्ट हैव बीन डेबिटेड हियर. सो आई विल से add back provision for tax. Income tax paid we will consider towards the end of the operating activity. Loss on sale of asset, it must have been debited to the P&L account, right? So I am writing here. Book value of the asset sold, selling price we will consider in our investing activity. That we will consider later on. Depreciation charge to P&L account, that is P&L account has been debited for this. Depreciation they gave you 20,000. Profit on sale of investment is credited to P&L, right? So if it is credited to the P&L, so my profit has inflated, तो मैं इसे minus करूँगा. Carrying amount of investment sold, that will be considered in your investing activity. Interest income on investment, it is credited to the P&L account. It is credited to the P&L account, so I am writing here interest on investment. इधर से माइनस होगा लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, तो इट विल हैव अ सेकंड इफेक्ट इन योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉट ऑपरेटिंग. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये ऐड हो जाएगा बाद में. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, सो पीएल अकाउंट डेबिट तो हुआ है लेकिन कितना इंटरेस्ट पे किया वही कैश अकाउंट में जाएगा, तो जितना डेबिट हुआ है वो मैं ऐड कर दूंगा. इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर 10,000. Interest paid will come in your financing activity. Increase in working capital, that we will adjust. तो यहाँ पे और कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला आइटम है नहीं. Right? Thereafter I will do adjustment for changes in working capital. Changes in working capital, they are saying increase in working capital 56,081. माइनस क्यू, जब आप वर्किंग कैपिटल बढ़ाते हो तो इसका मतलब आपका कैश इतना ब्लॉक हो गया है, so this we have subtracted. Cash from operation before tax. From that I will minus tax paid. Tax paid during the year they must have given you. They have given you 4284 has been paid. Provision तो इतना किया था लेकिन एक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना हुआ है 4248. अमाउंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैश यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. ये आपका नेट कैश यूज हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. तो फर्स्ट एक्टिविटीज का आंसर आ गया. सेकेंड एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो उन्होंने दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट नेट और उसका बुक वैल्यू दिया है. तो आप चेक कर सकते हो 40 रुपीज का लॉस हुआ है और बुक वैल्यू है 185. तो अपना सेलिंग प्राइस क्या होगा 185 माइनस 40. Cash comes in, therefore add. Profit on sale of investment is given 100 and carrying amount of investment sold is 27,765. There is a profit, so profit will be added to the book value to get the selling price, right? So sale of investment, $27,865. Interest expenses for the year, ये तो यहाँ पे नहीं आएगा. इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी नहीं आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये भी नहीं आएगा. परचेस ऑफ फिक्स असेट, यस, तो परचेस ऑफ फिक्स असेट विल बी माइनस 14,560. इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 3,850, ये भी आउटगोइंग. Expenditure on construction of WIP, that is fixed asset, is yet to begin, but still we have spent amount 34,740.
34,740. In between एक amount interest income on investment which you must have received 2506, ये भी ऐड हो जाएगा. Interest income 2506. I will go to the next page because I don't have sufficient space. We are talking about this interest income on investment, so you must have received the cash investing activity में ऐड होगा. I will do the addition of second activity now. अमाउंट नेगेटिव है, इसके लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. थर्ड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड टैक्स पेड 8535. कैश गोज आउट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 8535. It is paid, therefore figure is negative. Provision for income tax has nothing to do with the financing activity. Income tax paid ये भी नहीं आएगा. Sale of asset, book value of the asset sold ये भी नहीं आएगा. Dividend नहीं आएगा. Profit on sale of investment ये भी नहीं आएगा. Carrying amount of investment ये भी नहीं आएगा. Income from investment. Interest expenses of the year paid किया हम लोगों ने, बराबर है. इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर कितना दिया हुआ है 10,000. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,520. जो पेड हुआ है वो अमाउंट आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. प्रोसीड फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स टू receipt of capital grant, receipt of grant for capital project 12. Proceed from short term borrowing. Borrowing is a loan, don't go by the word short term. Borrowing is a borrowing, loan. लोन आपने लिया है, आपने लोन लिया है 20,575. Proceed from long term borrowing 25,980. In this way we have completed this also. Amount is positive, so I can say it is net cash generated in financing activity. So we got the answers of all three activities. First activity it is negative 2895. Second activity it is negative 22,634, and last activity positive 27,514. These all are the net cash flows arising from three activities. ये तीनों का आप जब टोटल करोगे तो आपको मिलेगा आपका कैश पोजीशन बढ़ गया कि कम हुआ है. ठीक है, तो तीनों का टोटल कर लेते हैं. मेरा कैश पोजीशन 1985 से बढ़ गया, तो आई कैन से नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Net increase in cash and cash equivalent. To that I will add opening balance of cash and cash equivalent. Opening balance of cash and cash equivalent is 5003. Students, closing balance of cash and cash equivalent as per our cash flow statement is 6988. उन्होंने क्या आंसर दिया एक बार चेक कर लेते हैं. They already gave you a cash balance of the same amount 6988. So whatever we have done technically it is correct. I hope this easy question, very straightforward question, you have understood. Then too, if you have any doubt, any queries, please put in the comment box. I will try to sort out your queries at earliest. Thank you for watching the video.